Good morning, my dear students. As we have seen the chapter number 3, Robinson Crusoe, also. Now, today we will see about the chapter My Elder Brother. Yeah, so do you know, students, elder brother? What is the meaning of elder brother? Bade bhai. Right. So, it's about the story of chapter number 4, My Elder Brother. It is taken from the famous Hindi story Bade Bhai Sahab, written by Munshi Premchand. So, I will give you a little bit information about the Munshi Premchand, who is a famous Indian writer in 28th century. And he has written many famous rites, very famous stories. From that, this is the conversation from Hindi to English written by Munshi Premchand. So what is this story about, students? This is a one type of play, drama hai ye. So what? Here is the story about the two brothers, the big and a small brother. So how they are affectionate, means how they are respect each other, how they give respects to each other, and how they obey them to each other. This story also shows to learning from our डे टू डे एक्सपीरियंसेस. रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो होता है उससे भी सीखने को मिलता है, प्लस फ्रॉम विच वी हैव बुक्स इन आवर स्कूल. बुक्स में भी तो सीखने मिलता है, प्लस वॉट वी experiences in our day-to-day life, that also we experience in this story that is a story about. So that is a most famous story. So let's begin the first scene given in this page number 65 of your textbook. Correct? So let's start the story. Hello students. So let's start the chapter here on page number 65. Here one scene 1 is given. So what is there? In a hostel room, they were staying in the hostel room, two brothers were living. So one was age 9 and another's age was 14 years. So you can identify, you can recognize who is the elder. Here the elder one is the 14 years, means the Bhaiya. And Munna, here the two characters are there, Bhaiya and Munna. So Munna is of 9 years and Bhaiya is of 14 years. So here in the scene that is given, they are studying on the studying table in a hostel, and the elder brother Bhaiya is reading a book. Here in that they are reading a book, and the younger one Munna is drawing pictures. He is drawing some pictures on the craft paper. So some pictures of animals or the birds and something. He is drawing a picture. So what now the characters tell, let's see. So here the first character tells about a Bhaiya. So here he asks the question that, what are you doing, Munna? Munna. What Bhaiya is telling that, what are you doing, Munna? He is asking the question to Munna that, Munna, I am drawing. मैं यहाँ पे drawing कर रहा हूँ. What now Bhaiya is telling? When you will study? When were you in the morning? Means तुम कब पढ़ने बैठोगे? तुम सुबह में कहाँ पे थे? Where you were in the morning time? Now what the Munna is telling, because Munna was turning pale, वो ना लाल पीला हो रहा था actually. He was turning means धीरे धीरे उसको डर लग रहा था अपने भाई से. That what he told that I was playing. So Bhaiya, how can you sit with a book for hours today together? मीन्स अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, भैया को उल्टा क्वेश्चन कर रहा है कि आप घंटों पर घंटों कैसे बैठ सकते हो बुक्स लेके. हाउ डू यू स्टडी फॉर आवर्स एंड आवर्स विद अ बुक, सिट विद अ बुक, राइट? जैसे आप लोगों का है, यू कांट स्टडी वेरी मच, राइट? सो भैया, दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन. सो योर स्टूडेंट्स, यू हैव टू अंडरलाइन, इट्स गिवन इन द टॉपिक भैया. The character Bhaiya, in the first line it is given foundation. So what is the meaning of foundation? Means the base. So if it be my base would be not clear, अगर मुझे मेरा base clear चाहिए तो मुझे पढ़ाई करना पड़ेगा. If I want my foundation to be very strong, so I need to educate, I need to study. So if the base is strong, then the building will stand firmly.
So here, what is the meaning of firmly, students? You have to underline that also. Firmly, Firmly. So what is firmly means very calm. अगर अच्छे से मैं पढ़ूंगा नहीं, इफ़ आई विल नॉट स्टडी, अगर मैं स्ट्रांग नहीं रहूँगा तो एक बिल्डिंग कैसे ब्रोटअप होगी, तो मैं कैसे बड़ा होके कुछ बन पाऊँगा, इफ़ माई बेस विल बी नॉट क्लियर देन. So sometimes it may take 2 years to study of 1 year, right? So 1 साल का काम हमें कभी कभी 2 साल लग जाते हैं 1 साल का काम करने में, बिकॉज ऑफ आवर लेजीनेस, बिकॉज हमारा बेस क्लियर नहीं होता है, हमारा रूट क्लियर नहीं होता है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते. अगर आपको ABCD ही नहीं आएगी तो आप इंग्लिश कैसे पढ़ोगे, right? So that's the point, that if you would be, your base would be not clear, so how would be you when you will grow up, your education will be good, right? So what your Munna tell here, they are having the difference between 5 years. Yes, you can see that Munna is of 9 years and Bhaiya is of 14 years, so we have a difference between 5 years. So here what Munna is telling now, that Bhaiya, you are 5 years older than me, so then I am 3 classes ahead of me. So means आप मुझसे 5 साल बड़े हो, you are 5 years older, और आप मुझसे 3 क्लास आगे हो, 3 से 4 क्लास आप मेरे से आगे हो. So I wonder means students thinking, सोचना. वो बोल रहा है मैं सोचता हूँ that why you are writing the same thing 20 times. आप क्यों एक ही चीज़ 20 बार लिखते जा रहे हो, एक ही वर्ड को. So one sentence more than 20 times to copy, it's better in a beautiful letters. Means poem के कुछ lines वो भैया 20 times लिख रहे थे. Who was writing? Bhaiya was writing one sentence of the poem several times, means 20 times he was writing. So now what the Bhaiya is telling? Bhaiya, you know that English is not a, Bhaiya, you know studying English is not a child play. Means English subject को पढ़ना कोई बच्चों वाला खेल नहीं है. It is not a child play. So one has to work very hard in order to learn English or to write. Means इंग्लिश को पढ़ना सीखने के लिए, लिखने सीखने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है. We need to write very hardly. Now to speak or write English properly, so tremendous effort is necessary. Tremendous means very hard effort. Tremendous means very hard. बहुत ही मेहनत लगती है इंग्लिश को सीखने में और रीड करने में, राइट. बोलने में भी, टू स्पीक एंड टू राइट, लिखने में और बोलने में बहुत मेहनत लगती है इंग्लिश, राइट. बट द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन टू फील्ड. मीन्स तुमको जब भी चांस मिलता है तुम खेलने चले जाते हो. whom to he is saying, Bhaiya is telling to Munna that whenever you get a free time you go to play, right? You never try to study, or you play with the marbles, you fly the kites with your friends in the garden. Can't you sit for the study 1 hour? Means क्या तुम 1 घंटे शांति से पढ़ने भी नहीं बैठ सकते हो, right? So here the brother is telling. So Munna, here now Munna is telling that what? Oh Bhaiya, there is a big mela in the village. Today we should go there, right? So here he is very interactive with his own words. खुद ही के बातों में वो उलझा रहा है अपने भाई को. वो जो पढ़ाई की बात है उसको स्किप कर रहा है. स्कीपिंग द टॉक्स ऑफ द स्टडीज, इज नॉट टेलिंग सम अबाउट द स्टडीज, राइट. सो भैया, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और टू वॉच अ क्रिकेट और अ हॉकी मैच? नाउ योर व्हाट भैया इज टेलिंग, क्या तुमने मुझे कभी क्रिकेट मैच खेलते हुए देखा है, ना कभी तुमने मुझे फेयर मीन्स मेले में जाते हुए देखा है, ना हॉकी मैच के लिए देखने जाने के लिए देखा है मुझे. I don't go near them.
आई नेवर लाइक टू गो देम मीन्स मुझे उस सब चीज़ों के सामने जाना भी पसंद नहीं है. आई प्रिफर टू स्टडी अ बुक मीन्स वॉट ही टेल दैट मुझे रीडिंग करना, पढ़ाई करना ज़्यादा प्रेफरेबल लगता है, अच्छा लगता है, इंस्टेड ऑफ मूविंग योर एंड देयर. So I don't go, I repeat minding class for then more than 2 years. मीन्स मुझे एक ही क्लास में 2 से 3 बार रिपीट करना बिल्कुल पसंद नहीं है. आई डोंट. So do you expect that to pass if you waste your time and playing all the time that you are simply wasting your father's hard-earned money? अगर आपको ऐसा लगता है कि खेलने से दोस्तों के साथ टू फ्लाई अ काइट विथ योर फ्रेंड्स यू विल स्टडी, यू विल गेट पास्ड इन योर एग्ज़ाम, सो इट्स नॉट ईजी. यू आर सिंपली वेस्टिंग योर फादर्स मनी. तुम सिंपली अपने हमारे पापा के पैसे तुम वेस्ट कर रहे हो. सो हियर व्हाट मुन्ना इज डूइंग, मुन्ना स्टार्टेड क्राइंग. व्हाट डिड मुन्ना डिड? He started crying as he was being scolded by his elder brother. He was making sounds, wah, 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 hoo, like this. He was making sounds. Right? So here, Munna did. भैया I feel running away and going back home. मुझे ऐसा लग रहा है, आप मुझे ऐसे डांट रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से दौड़ के भाग के अपने घर चला जाऊँ. I went home again. So what भैया is telling? Now stop crying. राइट, वॉट भैया इज टेलिंग, अब रोना धोना बंद करो. पुट अ नाइस स्माइल ऑन योर फेस. नाउ वॉट भैया इज टेलिंग कि अपने फेस में एक स्माइल लाओ. लाइक आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स टू मेक अ स्माइल ऑन योर फेस, टू हैव अ स्माइल ऑन योर फेस. सी वॉट नाउ योर ब्रदर इज डूइंग. नाउ अब भैया क्या कर रहा है मुन्ना के लिए? ही इज़ प्रिपेयरिंग वन टाइम टेबल. As you have a timetable for your online lectures, as he is preparing a timetable for his study lectures, for studying what to day things. every day वो रोज़ दिन में क्या करेगा वो प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, राइट. सो इन पेज नंबर 66 you can see the timetable. It's 6 a.m. he will wash his hands, and it's 6 to 8 he will read English, 8 to 9 maths, 9 to 10 history, 3:30 then he went to the school. Now grammar, half an hour for strolling means to move here and there, many English composition, then dinner. At last 10 to 11 he will read some books and went to the bed. 10 to 11 the timetable is given in page number 66, right. So he made a timetable for his younger brother, right. Now here Munna, actually his brother has not written the time to play in that, right. So he told that bhaiya where is my time to play. He is telling that मेरे पढ़ाई करने का तो टाइम आपने सब टाइम टेबल बना दिया, बट वेर इज़ अ टाइम टू प्ले. भैया प्ले, व्हाट इज़ नीड ऑफ दैट मुन्ना, क्या काम है उस चीज़ का, खेलने के लिए क्या ज़रूरत है खेलने की. नो मुन्ना, ओह आई लव द ग्रीन फील्ड्स भैया, द जेंटल ब्रीज मीन्स ठंडी हवा, द कूल एयर, दैट इज़ कॉल्ड जेंटल ब्रीज स्टूडेंट्स. सो आई वॉन्ट टू जम्प लाइक अ फुटबॉल, जैसे फुटबॉल जंप होता है वैसे मुझे भी जंप करना ग्रीन फील्ड्स में अच्छा लगता है. लाइक टू टच एंड गो हुत्तू तुतू मीन्स टू प्ले द कबड्डी विद द फ्रेंड्स, to play a footballs, to play gulli dandas and many things he wants to play in that, right students. So I hope students you all have understood this part 1 story of my elder brother very nicely. So I hope you will understand. Lastly, after completing the part 2, I will tell the moral of that story. So till that, read the chapter, read well as you know the story for you, and next time we will meet with the new part 2 video of the chapter My Elder Brother, written by Munshi Premchand. Till then, bye bye and have a nice day.